How's it going, everybody? Gaurav, Bhatt, and Mihir Vasavda here. You're listening to the Express Sports Podcast, and it's game time. On the agenda today is the upcoming India versus Pakistan match at the T20 World Cup on 24th October. That is tomorrow. It will be the opening game of the tournament for both teams. As always, a lot of intrigue, a lot of excitement, lots of boycott calls already, Mihir. It's such an evergreen topic. But yeah, I was saying it doesn't matter if you follow cricket properly or not, if you are out of loop in terms of what's going on, since there's always such a cricket overload nowadays. But when India versus Pakistan game is on the horizon, people take notice. And that's true for this time also, isn't it? Absolutely, Gaurav. I think it ticks all boxes for the build-up of an India-Pakistan match. Whatever is happening right now across both sides of the border, I've been listening to a lot of Pakistan news shows and radio shows and expert opinions and everything. And वहाँ पर तो ये जो comments है from India's politicians about cancelling the match, like they're going super hyper about it and एक मौका नहीं छोड़ रहे to criticize every move, every word that is coming from India. So उनका build-up is properly on that angle कि India once again is politicizing the match and हमारी टीम इतनी अच्छी है, उनकी टीम इतनी अच्छी है, स्पोर्ट पे फोकस करो आप क्यों पॉलिटिकल चीजों के लिए, हमारी तरफ से तो कभी ऐसे कोई स्टेटमेंट्स नहीं आते हैं, आप देखिए कभी पाकिस्तान से ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं एंड इट इज क्वाइट अमेजिंग हाउ दे गोइंग फुल bazooka on that issue and it's also fun because that adds to the intrigue and I don't think ये मैच में और हमें कोई intrigue कुछ चाहिए, it sells itself, but this kind of adds to everything. Yeah, almost always without fail, the India versus Pakistan match is played in the backdrop of some newsworthy stuff, something that is happening. I think it by design काफी ज्यादा, but it's also because अब इतने कम मैचेस होते हैं. It's not India versus श्रीलंका की हर दूसरे हफ्ते में वो लोग खेल ही रहे हैं, तो it's such a मतलब ईद का चांद हो गया है for a lack of a better phrase ये वाले मैचेस. But मीर इस बारी why this excitement? Because we know that there's a lot of turmoil going on in Pakistan, and just to bring listeners to speed, there's a new chairman, the CEO has resigned, and head coach Misbah-ul Haq and bowling coach Waqar Younis resigned last September. They cited bio-bubble fatigue, of course. They were supposed to be 12 T20Is played before the T20 World Cup in terms of warm-up, अपना थोड़ा bench strength check करने के लिए, form में आने के लिए. They managed to play just one. वेस्ट इंडीज के साथ जो सीरीज होनी थी वहां पे इंक्लीमेंट वेदर की वजह से पुट पेड टू डैट, एक सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से न्यूजीलैंड टूर पूरा कैंसिल हो गया. एंड देन देयर वाज दिस मच क्रिटिसाइज्ड डिसीजन फ्रॉम द इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड टू बैक आउट ऑफ विजिटिंग पाकिस्तान. सो मेरे इतना सारा टर्मोइल के बाद में, एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव इंडिया जो कि दे कमिंग राइट ऑफ द आईपीएल हाई, और सारे प्लेयर्स जो अपने इंडियन स्क्वाड में हैं सब अपनी अपनी टीम्स के लिए प्रोमिनेंटली फीचर करते हैं. तो काफी ज्यादा इट्स सच अ स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट, इजंट इट? इन अ वे मिसमैच भी कह सकते हैं हम, अगर जो प्रिपरेशन वाइज इफ वी आर लुकिंग एट दिस मैच, सर्टेनली इट्स द अमाउंट ऑफ मैचेस इंडियन प्लेयर्स हैव प्लेड, ऑल्दो दे माइट नॉट बी विद द नेशनल टीम आईपीएल के लिए, बट आईपीएल itself I think it's no less than a solid international match experience for India's players. So no doubt India is heading into this match with a lot of experience. Problem of plenty वाला भी एक किस्सा है इंडिया के लिए, where say for example in opening or in the bowling department or even for the all-rounder you've got so many options कि आप ये choose करने के पीछे पड़े हो कि हम किसे खिलाएं. Whereas for Pakistan, like you rightly said, it's been very chaotic, the entire build-up to this match. But then again, यार, name one team जो chaos को और better तरीके से handle कर सकती है than Pakistan. I think और कोई टीम इससे ज़्यादा equipped नहीं है इतनी अच्छी तरीके से. And World Cup है, and of course India has had an upper hand over Pakistan in World Cups. But yeah, I'm just looking for an upset because that would create a nice storyline, if anything else. I think we'll get to that. I think we'll both dish out our preferences, what we want, and that chaotic bit that you brought up, that's what makes Pakistan, I know it's a blasphemous thing to say, but that's what makes them a fan favorite team to follow. But even before that, Mihir, let's dissect the teams that we have on board for now. And let me just do India because
आईपीएल थोड़ा क्लोजली फॉलो किया और अभी वार्म अप गेम्स भी देखे हैं. इंडिया, लाइक यू सेड, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी. इट्स अ गुड हेडेक इन मेनी डिपार्टमेंट्स. खासकर कि अगर स्पिनर्स में बात करें, रविचंद्रन अश्विन हैज मेड हिज T20 comeback. He had an almost thoda indifferent IPL. He wasn't in the thick of things other than the on-field slash off-field incidents that we mentioned in the podcast a couple of weeks before. But मेरे spinners में हैं राहुल चहर हैं. There's एक mystery spinner भी हैं, वरुण चक्रवर्ती, who has put in performance after performance, season after season for Kolkata Knight Riders in the IPL. Like we said, IPL has sort of become that litmus test, plus almost like this, it's become the selection criteria for informed players, especially when the T20 tournament is this close. Other than that, मिहिर, तुमने बोला ओपनर्स में काफी फंसा हुआ मामला है. यू वांट केएल राहुल टू ओपन, यू आल्सो हैव ईशन किशन, यू हैव रोहित शर्मा, विराट कोहली. समटाइम्स ही हैज एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू ओपन, बट आई वुड लाइक टू से कि कैप्टन्स में भी थोड़ा प्लेंटी ऑफ चॉइस है, बिकॉज विराट कोहली हैज जस्ट स्टेप डाउन एज captain. But from what you could gauge during the warm-up games, he's still involved, yeah. He's still in the ears of the bowlers. He's still out there orchestrating the field. Of course, in association with the captain, Rohit Sharma. But I think this might not be a case of too many cooks, yeah. It's two very different but two very sharp analytical minds coming together. So I think captains में भी एक थोड़ा good headache है. But say somebody like a Hardik Pandya, there's still a question over him if he is playing as a specialist batsman. Is he good enough to be a specialist batsman? Do you want him to be there just as a hitter? Will he be able to bowl? There's still question marks over that, even though he has shown no signs कि he will bowl, but there's still people saying कि first game आते में he'll be able to put in an over or two. We'll see about that. But what's happening on the other side of the border, यार, क्योंकि हमेशा ज्यादा मजा ये देखने में आता है कि यार पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है. एंड लाइक वी सेड, बहुत ज्यादा टर्मोइल, मैचेस नहीं मिले Especially जब लगातार. शादी का माहौल, और यहाँ पर शादी को आप एक हाई ऑक्टेन क्रिकेट मैच से रिप्लेस कर लो तो शायद मजा और ही आ जाता है टू सी कि पड़ोसी क्या कर रहे हैं. और पड़ोसी यार काफी एक तरीके से उनका जो केओस ऑफ द पिच है वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा है इन द वे दे आर गोइंग अबाउट देयर टीम सिलेक्शंस एज वेल. सो रमीज राजा के ऊपर, हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ही इज जस्ट रिसेंटली टेकन ओवर. And he's being mocked somewhat because as a commentator, as an expert, he apparently repeatedly questioned the inclusion of quote-unquote oldies like Shoaib Malik in the team. And अब जबकि वो खुद chairman बन गए तो one of the first teams that he selected has Shoaib Malik in the team. And वो एक decision के ऊपर lot of people are kind of scratching their heads कि यार ये क्या हो गया, कैसे हो गया. And he's not the only late change. Sarfraz Ahmed and Mohammad Hafiz are also included in the team. Now, Sarfraz Ahmed, there is a big question mark back in Pakistan कि क्या role में उसे खिलाया जाए. Like there is one school of thought which says कि make it clear to him that his only job will be with the bat. तो ताकि थोड़ा उसका mind जो रहेगा वो थोड़ा सा कम cluttered रहेगा and he'll be able to perform better. Then how do you play Shoaib Malik? Where do you play him? That is another big question. But more than that, I think what the big debate is going on in Pakistan right now is with their bowling department. Now they have Shaheen Afridi, Hassan and Rauf. All these players are pretty solid. काफी मतलब देखेंगे तो तगड़ी fast bowling lineup है इनकी. But one of the things that is being debated over there, which we have also seen through the IPL, is especially after IPL, जहाँ पर pitch में इतनी शायद wear and tear हो सकती है. We don't know how the pitches will play, whether they will assist fast bowlers. The concern they have is, do they have enough good quality slow bowlers or spinners? Jo, like you rightly pointed out, India is somewhat sorted in that department at least. So, वहाँ पर they are kind of not overly concerned, but that is one department जहाँ पर थोड़ा उन्हें एक doubt है in their mind. So the bowling department, apart from the part-time bowlers and slow bowlers, they seem to be pretty much sorted. And then the question goes back to top of the order, their batting. Now, again, they have a few options. Some are saying that Sharjil and Fakar should be opening the batting lineup, and then you have Shoaib Malik in the middle. But then they've been trying all sorts of things. And going into this match, Pakistan do not seem to be sure कि उनकी first 11 क्या रहेगी, and more than that, कौन सी order में खेलने आएगा. So that bit of uncertainty is something that I don't think it would be giving their fans, their followers a lot of confidence. But again, this is Pakistan and they thrive in situations like this.
Now listen, on this podcast we'll be making a couple of statements जो कि लगेगा काफी ज्यादा अरे यार ये कॉन्ट्रेरियन बनने के लिए कॉन्ट्रेरियन बन रहे हैं या मतलब गोइंग अगेंस्ट द ग्रेन फॉर वॉट एवर रीजन, बट उसमें से पहला मैं यही फेंक देता हूँ कि आई लाइक T20 फॉर्मेट, नॉट ओवर ODIs और टेस्ट, अगेन डिफरेंट स्ट्रोक्स, बट T20 फॉर्मेट में खास करके व्हेन यू कम टू अ T20 वर्ल्ड कप, अ बिग T20 टूर्नामेंट, जनरली फॉर्म हैजंट प्लेड अ लॉट ऑफ रोल इन डिक्टेटिंग द चैंपियंस यार। मिहिर, अगर हम पहले भी देखें, वी स्टार्ट विद द इनॉग्रल वन यार। इनफैक्ट व्हाई डोंट वी जस्ट टेक दिस स्ट्रोल डाउन मेमोरी लेन। 2007 का ही अगर हम बात करें, 2007 में एक और वर्ल्ड कप हुआ था खैर 50 ओवर का उस गर्मियों में, एंड दे बोथ हैड क्रैश्ड आउट इन द फर्स्ट राउंड अनसेरेमनियसली, और बहुत ज्यादा उसके बाद में बवाल मचा था हर जगह, कितने पुतले फूक दिए गए थे, पता नहीं क्या क्या हो गया था। एंड कट टू 3-4 months लेटर एंड दे वर द फाइनलिस्ट ऑफ द इनॉग्रल वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट। इंडिया जो है, इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली, ODI सीरीज भी हार के आ रहे थे इंग्लैंड से, और काफी सारे सीनियर्स ने अपना अल से पल्ला झाड़ दिया था। उन्होंने बोला ठीक है यार, ये नया टूर्नामेंट है, पता नहीं है फॉर्मेट कैसा है, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, लेट्स मेक धोनी कैप्टन और वो जाएं और देखा जाएगा उसके बाद में, एक यंग टीम को भेज दें। एंड वन ऑफ द अर्ली मैचेस इन दैट कैंपेन वाज अगेंस्ट पाकिस्तान. इट वॉज अ टाइड गेम, आई वुड से इट वॉज टेक्निकली टाइड, बट एक बोल आउट करके एक फॉर्मेट कराया गया था मेहर, आई एम श्योर यू रिमेंबर इट, जिसमें मैच टाइड होने के बाद कोई सुपर ओवर नहीं था, कुछ नहीं था, दे टुक अ लीव आउट ऑफ द वर्स्ट फुटबॉल बुक एवर, और उन्होंने कुछ पेनल्टी स्ट्रोक्स टाइप का 5-5 बॉल एक खाली विकेट पे कराए टाइप का कुछ कराया था. एंड दैट वॉज अ वेरी एक्साइटिंग मैच. दैट वॉज ऑल्सो अ ब्रेक थ्रू मैच फॉर रॉबिन उथप्पा. रोहित शर्मा काफी अच्छे फॉर्म में लग रहे थे. Of course, the final, we have threadbare, हमने इतना एनालाइज किया है. In fact, during the height of the pandemic last year, we had a series called Old Scores, where Nihal Koshi, friend of the podcast, he joined me, and we talked about the T20 World Cup final and why it was so important, the circumstances around it, the performances. तो वो आप लोग सुन सकते हैं. मेरे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा यार, सुपर ओवर वर्सेस बॉल आउट, व्हाट्स योर प्रेफरेंस? And secondly, what's your favorite, or what is the first India-Pakistan classic that comes to your mind? First India-Pakistan classic that comes to my mind. Wow. There are so many. I mean, of course, all the Sharjah matches. I really won't go into any of the World Cup matches because, of course, World Cup has all good memories as far as India's point of view is concerned. And 96 is my earliest memory as far as World Cup goes. But like, I didn't watch cricket as fanatically back then as I did say football. थोड़ा थोड़ा जो थोड़ा बहुत दिखता था कभी टीवी पे फुटबॉल भी, and I wasn't big into watching sports on TV in 96 97 का टाइम पे. I gradually took to it. So 99 World Cup का match I really liked and I remember that pretty well. But all the Sharjah matches, I don't know, there was something about Sharjah which was really fun also because it was our vacation time in school and all we did was play cricket and then watch tournament in Sharjah every summer. So वो काफी मजेदार सा एक चीज होती थी. And I forgot what was the second thing that you asked. Ball out or super over? Which one? No, ball out. Any day, any day. I think. That's a surprise. Oh yeah, I don't know why super over यार, मतलब of course it's ठीक है, आपने 20 ओवर ऑफ बिग हिटिंग देख ली and then there is just one more over जहाँ पर people will just go to hit another six, so you're not seeing anything new or different. I think ball out gave a very nice edge and a very nice element to cricket जो हम कभी देखते नहीं है, जहां पर बॉलर्स के आई डोंट नो स्किल्स कहेंगे बट एटलीस्ट एक्यूरेसी थोड़ी सी दांव पे आती थी. बिकॉज यार यू आर टायर्ड ऑफ वाचिंग बैट्समैन हिटिंग सिक्सेस फॉर 40 ओवर्स, राइट? आई मीन, तो थोड़ा सा एटलीस्ट एक आप देख सकते हैं कि विदाउट बैट्समैन इफ योर बॉलर्स आर गुड इनफ टू हिट द स्टंप्स and you just have to be thoda sa street smart to do that. I remember in 2007 the Pakistani bowlers were trying so many different things. कोई spin करने की कोशिश कर रहा है, कोई एकदम तेज डालने की कोशिश कर रहा है, जबकि Indians showed, right, कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको आके सिर्फ धीरे से बॉल स्टंप की तरफ फेंकनी है और अपने आप बॉल टच हो जाएगी स्टंप को. तो कॉमन सेंस आपको यूज करना है, साथ में थोड़ा स्किल भी ऑफ कोर्स चाहिए. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी हाउ अ बॉल आउट गोज बिटवीन से द करंट पाकिस्तान टीम. यू नो, जसप्रीत बुमराह अगर जो बॉल आउट के लिए जा रहा है तो वो कैसे डालेगा उसमें. तो एनी डे फॉर बॉल आउट. दैट्स सच अ ब्रेव चॉइस यार मिहिर. मतलब तू यहाँ है नहीं तो शोल्डर पे पैट बनता था, बिकॉज जनरली वही रहता है यार, नहीं मतलब प्योर होना चाहिए यार, बैट और बॉल का कॉन्टेस्ट होना चाहिए. बट लाइक यू सेड 20 ओवर तो चल ही रहा है ना बैट बॉल. यार प्योर नहीं रहा है ना अभी ऐसे भी. या एंड इवन द बॉल आउट, ठीक है,
इट्स बीन लेबल्ड फ्रिवलस या जो भी है, मतलब ऐसा ही रैंडम है क्या, रैंडम वे ऑफ डिसाइडिंग. बट लाइक यू सेड यार मिहिर, 2007 का जो बॉल आउट था, देयर वर अ लॉट ऑफ टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व, जिसमें पाकिस्तान के तीन बॉलर्स लाइक यू मेंशन, दे ट्राई टू गो फास्ट, they tried to go with their full run up, और बेचारे what they did was they bowled that perfect off stump से थोड़ा बाहर corridor of uncertainty में line, just missing the wickets. Whereas bowling skills का बात करें तो सहवाग and उतप्पा not really known for their bowling skills, but they just turned up. और second चीज अगर आप लोग notice करेंगे listeners की, MS Dhoni is sitting behind the stumps, right behind the stumps, and he is kneeling and sitting just to give that much more of an idea कि कहाँ पे batsman होगा. Whereas अपने कामरान अकमल तो खैर 50 गज पीछे जाके खड़े हो रखे थे फास्ट बॉलिंग कलेक्ट करने के लिए. बट या विच ब्रिंग्स मी टू द मुद्दे की बात, द मसला क्या है पॉइंट ऑफ दिस पॉडकास्ट. इन 2019 ड्यूरिंग द 50 ओवर वर्ल्ड कप we had a series called World Cup Locker Room where we did a preview for the India versus Pakistan clash, and we presented our viewpoint with Daksh Panwar, national sports editor Sandeep Dwivedi, and myself, and we try to present this viewpoint ki yaar, if you like supporting underdogs, or if you are a true sports fan in that terms, where you don't necessarily choose sides or have natural alignments, natural loyalty to a certain side, then you'd much rather prefer the underdog, which in more cases, like you said, especially in World Cups, has been Pakistan, right? तो मिहिर, क्या ये इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल है क्या ये स्टेटमेंट बोलना कि इफ आई गो ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि यार आई सपोर्ट पाकिस्तान, आई हैव सपोर्टेड पाकिस्तान, आई स्पेशली सपोर्ट पाकिस्तान व्हेन इट्स अगेंस्ट इंडिया, इट शुडंट बी, इट नीडंट बी दैट कंट्रोवर्शियल ऑफ अ स्टेटमेंट, राइट? एंड व्हाई इज इट सो कि अगर ऐसा कोई बोले बेचारा तो उसको भेजा फ्राई में रणवीर शोरी के साथ में कंपेयर कर दिया जाता है, और ही इज लेबल्ड एज दिस एज लॉर्ड कॉन्ट्रेरियन हु इज जस्ट अरे नहीं बॉस, आई जस्ट वांट केओस इन द वर्ल्ड. अरे यू कैन बी अ स्पोर्ट्स फैन एंड यू कैन सपोर्ट एन अंडरडॉग. इफ am I correct in my assessment or not? Where do you stand on this? No, of course, and I don't think अगर जो underdog वाला भी I don't think इसमें case है, because पाकिस्तान या इसमें see there are two angles to it. अगर जो आप sports follower हो, then you'll understand where we come from. अगर जो आप political नजरिए से देख रहे हो, then you'll have a very different point of view. Now, when we say that we will support Pakistan or we like Pakistan, we mean the talent that Pakistan players bring into the game. We're talking about, say, Mohammad Amir, अगर जो हमें देखना है तो उसका pace bowling से we might be smitten. This time, for example, I might be very keen to see Haider Ali, Shoaib Malik, जो मतलब कितने सालों से एक scrawny, skinny teenager से लेकर एक 36, 37, whatever year old he is right now, उसका जो एक transition है in the team, I am very curious to see that. तो आप अगर जो sporting point of view से देख रहे हो, then तो कोई इसमें मुद्दा है नहीं. It's almost like supporting or watching an Australian team. I remember, Gaurav, I'm sure for you also it would have been the same, कि in 90s and early 2000s, we were so, मतलब एक प्यार सा ही हो गया था, पूरा एक man crush था on वसीम अकरम and वकार यूनिस. Like हम जब भी क्रिकेट खेलते थे तो all the time we used to try to imitate their bowling actions. Always. जब भी शाहिद अफरीदी burst onto the scene, every boy in my locality tried to hit the ball like Shahid Afridi. So it has always been the case when it is about cricket and Pakistan. I think there is a lot of respect, there is a lot of admiration for Pakistan's players. Grudging admiration, अगर जो हम ये भी कहना चाहे तो शायद वो भी एक हो सकता है. And it is also the same in the other side of the border. Like I said at the start of this podcast, I've been watching a lot of their videos and shows in Pakistan, and they have very similar level of affection for Virat Kohli, for Rohit Sharma, for Jasprit Bumrah. The eloquence they wax about Kohli's aggression, about how, in fact, हम इंडिया में in fact ये Kohli and Rohit Sharma को as a rivalry देख रहे हैं, but there they are talking about how Sharma is complimenting Kohli's captaincy style, where Kohli doesn't have an ego and he consults Rohit Sharma for whatever decisions he takes on field, and how they're kind of respecting that level of camaraderie between the Indian players. So they are talking the same way about India's players as well. So I don't see why it should be a controversy if I say, like you said, that I like Pakistan cricket.
ये एक जो लास्ट के 2 सेकंड है वो बार बार लूप पे चला देते हैं. दैट शुड बी द पॉडकास्ट फॉर दिस वीक. बट या, जस्ट टू ऐड ऑन टू द सेलियंट पॉइंट्स दैट यू मेड, मेयर, एक तो जो ऑस्ट्रेलिया टीम तुमने मेंशन किया यार, दोज इनविंसिबल्स एंड ऑल, आई नो दैट दे आल्सो एंजॉयड अ स्ट्रॉन्ग फैन बेस इन इंडिया. दे वर लॉट ऑफ एडमायरर्स एंड राइटफुली सो. दे प्लेड दैट ब्रांड ऑफ क्रिकेट. बट उस टाइम में मैं यार इंडिया को सोचता था कि काश ये ऑस्ट्रेलिया जाके हरा पाए, या इधर कोई ओडीआई हो रहा है तो मे बी दिल गेट गिलक्रिस्ट आउट अर्ली, या हेडन जल्दी आउट हो जाएगा. इट्स ऑलमोस्ट काफी कॉन्ट्रास्ट हो चुका है अभी. तो फॉर मी इन द स्पोर्टिंग सेंस मेरे को वो ज्यादा पसंद आता है यार. वी आर ऑलरेडी सीइंग दिस बेहेमोथ ऑफ एन इंडियन टीम जो कि सबको रौंदते हुए जा रहे हैं. दे विनिंग ओवरसीज एंड एवरीथिंग. तो कहीं ना कहीं पे आई वांट देम टू फेस दिस अंडरडॉग हु जस्ट अपसेट्स द एप्पल कार्ट, और कुछ ना कुछ उल्टा हो जाए. तो इन दैट सेंस इट्स ऑलवेज फन टू सपोर्ट अ न्यू कासल अगेंस्ट अ मैनचेस्टर सिटी. अब तो न्यू कासल नहीं बोल सकते हैं. हाँ, अब तो मैं बहुत खुशी खुशी बोल सकता हूँ कि न्यू कासल यूनाइटेड सपोर्टर रहा हूँ मैं काफी टाइम से. बट या, हैविंग सेड ऑल दैट, वी होप दिस इज गोइंग टू बी अ क्रैकर ऑफ अ गेम. और कुछ भी हो यार, जो भी साइड जीते, आप लोग भी थोड़ा मतलब धैर्य रखें, संयम रखें, एंड होपफुली वी गेट टू सी अ लॉट ऑफ गुड क्रिकेट and a lot of names that we mentioned, yaar. Indian side maybe the narratives that we mentioned, the storylines, the choices, and especially over at the Pakistan side, इतना रफ हालत में से निकल के वो लोग अगर आ रहे हैं बिना मैच प्रैक्टिस के, एंड दैट इज द सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान स्पिरिट दैट वी हैव सीन इन क्रिकेट ऑल द टाइम. कि कभी भी ऐसा कब हुआ है यार कि दे आर द इनविंसिबल्स और दे आर द इनफॉर्म टीम, बट दे जस्ट टर्न अप एंड दे जस्ट अपसेट एवरीबody. एंड yeah, on the topic of upsetting everybody, let's bring in producer Shashank for his 2 cents. Producer Shashank, like I said at the top of the episode, you need not be a big time cricket fan to know that an India-Pakistan game is around the corner, right? Yeah, definitely. I mean, that is, मतलब आप पूरे साल पूरे टाइम क्रिकेट कुछ भी नहीं देखते, but at least this match you will definitely watch, and I think it's just fun that way because, and you are right, इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले ऑलरेडी पॉलिटिकल बातें तो शुरू हो जाती है. मिनिस्टर्स ऑलरेडी बोल रहे हैं मैच कैंसिल करो, और स्पोर्ट्स पर्सन बोल रहे हैं कि अरे मैच नहीं कैंसिल होना चाहिए. सो ऑल दैट टॉक इज ऑलरेडी देयर. तो इस मैच की मार्केटिंग मतलब कुछ में किसी एंगल से कमी नहीं रहती है. सो या, दैट इज ऑलवेज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. बट द अदर थिंग दैट पॉप्ड अप ऑन माय टाइमलाइन वाज, रिमेंबर दैट गाय in 2019 who became viral? Yeah, I know exactly who you're talking मारो about. मुझे, Yeah. मारो मुझे, मारो. पिज्जा खाए हैं, ये बर्गर खाए थे इन्होंने. Yeah. That guy popped up on my timeline again, and he's back. And that made me question, ki, like, okay, how much have, like, okay, that burger pizza point, I don't know to what extent it was fair and is fair to question. But I was wondering, like, do you guys have any idea, like, since the last time, since 2019, how much have these teams sort of improved? It's a tough question to answer in the sense कि एक तो we're talking about a different format, Shashank, but also India more or less has been on the same level, yaar. Even going into 2019, they were one of the favorites and they marched to the semi-finals. But then that famous discrepancy comes up कि under Kohli you're not able to finish the tournaments well. And Pakistan, on the other hand, I'll say, Mihir, I don't know if I'm right or wrong, but certain new talents have cropped up even in the last 2 years, as has always been the case. There's not a lot of consistency in Pakistani lineups over the years if we see them. But इस बारी भी कम से कम इन 2 सालों में भी there are a couple of fresh faces that that have taken their cricket higher, right? Yeah, of course. And I mean, with Pakistan, that will, I think, never stop. And like, to be honest, but for all the talks about the fresh faces and everything that is coming up, I'm waiting to see how, say, Babar Azam plays. If he opens the innings for them, as is being suggested in some quarters, Babar Azam ho gaya. I'm very curious to see how Shaheen Afridi uses his height and pace on the wickets in UAE. काफी कुछ है देखने के लिए. I mean, with Hassan Ali is still the same level as we've seen when he last played. Mohammad Rizwan, Fakhar Zaman, कितने सारे लोग हैं. Haider Ali, like you already mentioned. यार भर भर के talent है. And last point that I'd like to make, which I found very interesting, the debate that is going on in Pakistan media and generally their expert circles, is the whole narrative in both countries. Now, they have pointed out, which got me thinking, ki whenever the question of this match has been posed to a current Indian cricketer or a past Indian cricketer,
they have dismissed it, saying, "Yeah, this is just another match for us," something which Kohli repeated a couple of days ago. And in Pakistan, they are concerned कि वो इतने बड़े बड़े claims कर रहे हैं वहां पर कि that is putting additional pressure on the team. So much so that Ramiz Raja said at the start of this week or sometime last week that if Pakistan beats India, then they'll be given a blank check, presumably by the government. तो वो कह रहे हैं कि ये सब जो statements आ रहे हैं from their current players, from their former players, that is only adding to the pressure on the players, and which is why the World Cup record, which is skewed in India's favor, is the case. It happens every time before a match where India have handled the pressure maturely and Pakistan have made very, very big claims, which ultimately leads to their downfall. Absolutely. So we'll see how those claims and promises and everything is fulfilled, how the match plays out, as the World Cup locker room series will be revived for the T20 World Cup. It will be along the lines of the Pod of the Rings episode where Shashank, I don't think उसमें भी इंट्रो म्यूजिक रहेगा या इतना सब जबरदस्त प्रोडक्शन क्वालिटीज जो आप डालते हैं वो होंगी, बट विल ट्राई एंड गेट यू द लेटेस्ट इफ नॉट एवरी डे एटलीस्ट आफ्टर एन इंडिया मैच. So yeah, stay tuned for World Cup locker room throughout the tournament. And that's a good note to wrap it up, folks. Stay tuned to the Express Sports podcast for game time every Saturday and for the upcoming World Cup locker room series. But more importantly, stay safe. Adios. You were listening to Express Sports by The Indian Express. This week's show was edited and mixed by Suresh Pawar and produced by me, Shashank Bhargav. If you like the show, then do subscribe to us wherever you get your podcasts. You can also recommend the show to someone you think will like it. Share it with a friend or someone in your family. It's the best way for people to get to know about us. You can also tweet us at Express Podcasts and write to us at podcasts@indianexpress.com.